We are just less than a week away, and the Women's Premier League is on the way, and it's coming all guns blazing for the second season running. It's time for team number two, and that is the Gujarat Giants, ready to get back to winning ways this season with the welcoming back of their captain Beth Mooney. How will they play? How will their team perform this season against all the other four teams? I have a special guest this time, Rishika. Rishika, for the first time, welcome to the show. How does it feel to be part of the fifth umpire with the recording session today of Gujarat Giants? Thank you so much, Preetham, for inviting me to your channel. It's my first time, and to be very honest, I'm nervous, but I will enjoy talking cricket because I love this sport, and very grateful that I'm joining your channel today. It will be a new experience for me. Thank you. No worries, my pleasure. But don't be nervous because cricket is something, if you start having a conversation, the time just goes away and you don't feel nervous anymore. We move on. As you said, let's begin. And we move on to the first slide of today. That is the squad for Gujarat Giants 2024. And let's bring to you. So this is an overview of them. A lot of new faces. I want to know how much you know about these players because I think as many new faces, so it's going to be new for the players as well. But beginning with Beth Mooney welcoming back, she had a very poor injury last season. But how important is her inclusion in the side? गुजरात जायंट्स का जो पिछला सीजन था दैट वाज नॉट वेरी गुड in the 2023 season, but this year the team is coming up with strong options, and as you said काफी नए players हैं इस टीम में. तो इस टीम में ज्यादातर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं और जो अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो वुमेन्स टीम थी वो उनमें से ज्यादातर प्लेयर इसमें आए हैं. तो कोई यंग टैलेंट इसमें इस टीम में इंक्लूड किया गया है, एंड वुड से काफी अच्छे ऑप्शंस रखे हुए हैं. जो ठीक है, इट्स ओके इफ दे आर अनएक्सपीरियंस्ड, बट बॉलिंग अटैक पेस अटैक काफी अच्छा आया है इस टीम में. वर्किंग ऑन समथिंग वेरी बिग, सो मे बी ये जो ऑप्शंस उन्होंने सिलेक्ट किए हैं फ्रॉम द डोमेस्टिक प्लेयर्स, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू शाइन इन दिस बिग वुमेन्स प्रीमियर लीग के प्लेटफॉर्म पर. एंड द सेकंड थिंग इज जो टीम मैनेजमेंट है, जो गुजरात जायंट्स का जो पूरा कोचिंग स्टाफ है, कोचेस है, शायद ये दिमाग में उनके ये सब चल रहा होगा कि सिलेक्टिंग ऑल दीज ऑप्शंस इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर दिस सीजन. सो मे बी इसीलिए शायद ये जो यंग टैलेंट है इस टीम के अंदर काफी ज्यादा है, एंड आई होप कि ये जो टैलेंट है काफी आगे पॉइंट्स टेबल पे एकदम एंड पर जाए, लिफ्टिंग द ट्रॉफी. Okay, so you're pretty much confident, but I would say that overseas players, some of them are very famous, but going to Harleen Deol and Sneh Rana, two international players for Team India, how much importance and how much responsibility lies on the shoulders for these two, I shouldn't say young, but experienced Indian players in the middle order of the Gujarat Giants? Sneha Rana and Harleen Deol, they are good all-rounders for the team. बॉलिंग ऑलराउंडर हो, बैटिंग ऑलराउंडर हो, काफी अच्छे ये दो ऑप्शंस है इंडिया इंटरनेशनल वुमेन्स के लिए खेलती टीम में. गुजरात जायंट्स की टीम में फॉरेन ओवरसीज प्लेयर्स हैं, उनके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है. एंड एज यू सेड कि ये जो दो नाम हैं इनके कंधों पर भी बहुत जिम्मेदारी ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑलराउंडर्स का ऑप्शन रखते हैं. और गुजरात जायंट्स की जो टीम है उनकी स्ट्रेंथ में से एक है कि ऑलराउंडर्स जो हैं इस टीम के स्ट्रेंथ बनकर निकल कर आते हैं फॉर दिस टीम. और ये जो दो हैं इंडिया इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो हमारा जो लोकल टैलेंट है उनको काफी रीच मिलेगी. Okay, fair enough. You're saying that you're pretty much not dependent on the overseas. You want the other players also to play freely and play with the responsibilities. I see, as I said before, a lot of new faces, but as you said, it's a young team which together they can prove the others wrong and maybe a surprise results we might witness. Going on to slide number 2, that is the SWOT analysis of Gujarat Giants, as I portrayed all the four sections. Number 1, that is very strong opening pair. We have seen Beth Mooney. Laura Walvet is welcomed back into the squad. A very, very good inclusion, I must tell you. The South African. How do you see those two opening pairs? Very destructive, I must tell you. एब्सोल्युटली, यू आर वेरी वेरी राइट. तो सबसे पहले जो उनकी स्ट्रेंथ आती है वो है ओपनिंग पेयर. एग्जैक्टली लास्ट सीजन में मुनी वाज रूल्ड आउट एंड शी, बट उनके स्टैट्स को अगर देखें हम, जो T20 इंटरनेशनल जो उनके स्टैट्स हैं, नेम्ड एज अ नंबर 1 T20I प्लेयर. मुनी का जो ओपनिंग प्लेयर है लॉरा वुलवर्ट के साथ, इन दोनों का जो पेयर है ना काफी स्ट्रॉन्ग है. ये स्ट्रेंथ बनकर निकल कर आता है इस टीम के लिए, क्योंकि बेथ मुनी की जो कंसिस्टेंसी है
वो और लॉरा उलवर्ट का जो एग्रेसिव प्ले अटैक है, बैटिंग, जो बाकी की जो बैटिंग लाइनअप है उसको काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है. सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस गुजरात जायंट्स team, that Beth Mooney and Laura Woolworth are going to blasting opening pair for this team. Okay, so you expect them, one of them at least, to be consistent throughout the entire game, every single game. But I see other sections as well. We have spoken a lot about the overseas players, the dependency, the youth as well. But look into your pace bowling attack, I think a little bit of weakness lies around there. How do you see about this season? Because compared to other teams, they have many, many strong players who can bash around the players. So how do you look into the pace bowling unit? Very inexperienced, but are you confident? This team has so much, so much of young players, young talent from domestic and under 19 team. इनका जो पेस bowling attack है थोड़ा inexperience है, but who knows, जो young talent है हमारी under 19 की जो women's team है, they were the winner in the finals. They took the World Cup. But experience है ठीक है, लेकिन जो wickets, ये depend करता है कहीं कहीं wickets पे. You can't be very predicting over this. ठीक है, unexperienced है, मान रहे हैं, लेकिन जो young players हैं वो टैलेंट पे थोड़ा ध्यान दे. अगर स्ट्रेंथ, जो उनका पेस बॉलिंग अटैक है, तो दिस विल बी वेरी गुड फॉर द टीम. पेस अटैक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है इस टीम के पास में. दे हैव अ फ्यूअर ऑप्शन. मेघना सिंह आ जाती है यहाँ पे, और नीचे के जो प्लेयर्स हैं, जो जो इनएक्सपीरियंस हम जिन्हें बोल रहे हैं, जो वीकनेस में हो सकता है ये चीज उनकी स्ट्रेंथ बनकर निकल कर आए. वाह दीदी, वाह दीदी. नहीं नहीं, दीदी, वाह दीदी. what is दीदी. The weakness can be the strength. I really like this one. And this ends the SWOT analysis of this team as a whole. You have explained it really well. Move on to the next slide. That is the head-to-head against each team of last season. What you have done against the Mumbai Indians, you have lost both. Against RCB, you have made it 50-50. Against Delhi, you have lost both, and against UP, you have lost both. So, fifth place was your result last season. Do you expect you guys to move into the semis at least this season? I wish गुजरात जायंट्स वुड गो, बिकॉज पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन काफी स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहे हैं. दे आर वर्किंग ऑन देयर वीकनेस, आई गेस. दे आर टर्निंग देयर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ्स, एंड आई होप गुजरात जायंट्स एकदम एंड तक जाए. एंड इस सीजन वी कांट से कि मुंबई ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है, दिल्ली ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए. हेड टू हेड, एज यू सेड, इज वेरी हेड टू हेड. गुजरात है, गुजरात जायंट्स का मुकाबला हमारी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और यूपी से होना है. सो देर आर हेड टू हेड, और आप किसी टीम को ऐसा नहीं बोल सकते हो कि दे आर गोइंग टू बी वीक दिस सीजन. गुजरात इज गोइंग टू बी वीक दिस सीजन, अनलाइक द लास्ट सीजन. You can't predict now. The season hasn't started, and who knows where it is going to end. As you said, head to head, we lost lots of. We finished at the fifth place last year. But I hope Gujarat at the end lifts the trophy WPL की. It है, सारी टीम अपनी strength पर, weakness पर ना खुद का analysis कर काम कर रही हैं, and Gujarat is doing the same. So I think this season is going to be a very head to head. Okay, so as we always say, before the match, every single match is a 50-50, and that's what you're saying. There's no weakness. Always, every single team has a chance to win on their giving day. Very fair enough. I agree with this. Going on to the next slide, Rishika, that is your 5 players you have picked according to you for the Gujarat Giants. You've spoken about Beth Mooney, spoken about Sneh Rana. The remaining 3 players, I want to hear a little bit of Ashley Gardner. Very versatile experience you have in the middle order. How important is she with the bat and ball for the Gujarat Giants in that middle stage? Exactly, एशली गार्डनर बहुत अच्छा ऑप्शन है. शी इज एन बैटिंग ऑलराउंडर. उनके स्टैट्स काफी अच्छे हैं. इनका जो स्ट्राइक रेट हम देख रहे हैं, एंड शी इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल. सो शी इज गोइंग टू बी वेरी गुड विद द बैट एंड बॉल टू. उनके जो विकेट्स हैं, उनके जो इकोनॉमी रेट निकल कर आते हैं बॉलिंग स्टैट से, वो काफी अच्छे हैं. सो यू स्पोक वेरी नाइस दैट एशली गार्डनर इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन. कि हाँ, if she is very strong player, and second of all she is Australian, so I think she is going to be the great for the team. She is going to काफी अच्छी player निकल कर आएंगी इस सीजन भी. दोनों ऑस्ट्रेलियन का तालमेल अच्छे बन सकते हैं, जैसे पिछला साल बनने का कोशिश किए थे, but Beth Mooney got injured. But talk us through the 2 new additions, Bobby Litchfield and Lee Tahuhu. 2 new players, I believe. Talk us through a little bit of them.
लिया ताहू डिस्कस्ड अर्लियर कि ये जो टीम है काफी ओवरसीज प्लेयर से काफी डिपेंडेंट है और काफी उनका जो इन्वॉल्वमेंट है इस टीम में ओवरसीज प्लेयर्स का काफी है, तो लिया ताहू इज वन ऑफ देम। शी कम्स फ्रॉम न्यूजीलैंड और इनके स्टैट्स भी देखे ना तो ये भी एक ऑलराउंडिंग ऑप्शन है, लाइक शी इज बॉलिंग ऑलराउंडर। सो आई थिंक इनके स्टैट्स भी काफी अच्छे हैं, शी कैन स्पीक विद बैट एंड बॉल टू एंड विद कॉन्फिडेंस। सो या जो इनका जो न्यू सबमिशन टीम है, आई थिंक दिस सो बी गोइंग टू बी ग्रेट ऑप्शन फॉर गुजरात जायंट्स दैट लिया ताऊ इज द inclusion in the team. Okay, so fair enough. You're pretty much confident in these five players to watch out for. Moving on to next slide, that is the fixtures for Gujarat Giants, starting with the Mumbai Indians, defending champions. आप लोग शुरू कर रहे हैं at Chinnaswamy Stadium. You guys do not have any home advantage. Bengaluru, Delhi, no home advantage. I'll come to that. But starting the season with facing the defending champions, the Mumbai Indians. How are the nerves? Do you think that you can upset on the day one? Listen, we discussed it earlier that कि हम सीजन के 50-50 हो सकता है, हेड टू हेड हो सकता है, तो थिंक एवरीथिंग एवरी टीम विद कॉन्फिडेंस। एंड हम ऐसा नहीं है कि गुजरात जायंट्स पिछले सीजन में आगे नहीं जा पाई थी एंड दे एंडेड अप लास्ट, बट thinking this season starting with confidence and with a lot of options, having new inclusion in the team and working on the strengths and weaknesses of this team. So yeah, I'm very confident that Gujarat can beat Mumbai, and whatever the teams come up, in front of the face, they can just fearlessly compete with them. And as you said, Mumbai is defending champions. ठीक है, डिफेंडिंग चैंपियंस है, बट गुजरात जायंट्स इज कमिंग अप स्ट्रॉन्गर दिस सीजन, सो आई गेस यस दे कैन बीट मुंबई इंडियंस। Okay, so your confidence is ठीक है, डिफेंडिंग चैंपियंस है तो क्या बात हुआ, इस साल तो हम लोग देख लेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड दिल्ली, बिकॉज बैंगलोर और दिल्ली पे मैचेस है, आई थिंक मुंबई, यूपी एंड गुजरात के लिए इट विल बी अ न्यूट्रल ग्राउंड। सो नो मैटर व्हाट एवर द ओपोनेंट इज, आई थिंक इट्स गोना बी अ फेयर एनफ गेम, 50-50 जैसे आपने पूरा शो में कह चुका है। सो आई एग्री विद दैट, एंड दैट कम्स अप विद द फिक्सचर्स, 8 games for each team. So good enough, fair enough matches for each team. And moving on to the last slide, which is my most favorite, is the predicted playing 11 you have chosen. The openers we have talked about a lot. Talk us through Harleen Deol at the top with at the number 3 position. Then you have the experience of Ashley Gardner, Bobby Litchfield, and then Sneh Rana going into the middle orders. The bowler section and a little bit of Harleen Deol. Do you think this combination is good enough to challenge for the title? एग्जैक्टली ये जो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है, इनका जो दैट दिस प्लेइंग 11 डज नॉट हैव अ डीप बैटिंग लाइनअप, डीप बॉलिंग लाइनअप, बट ये दिस प्लेइंग 11 हैज अ गुड ऑप्शन इन ऑलराउंडिंग। ऑलराउंडर्स काफी हैं इस टीम में, टॉकिंग एशली गार्डनर, स्नेहा राणा, कैथरीन ब्रीस, लिया ताहू, हरलीन देओल, दयालन, हेमलता, ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑलराउंडिंग ऑप्शंस है। एंड स्पीक विद द बैट एंड बॉल बोथ साइड्स। अगर आपको बॉलिंग में कहीं कमी आ रही है तो यू कैन call for them, and if you don't have a deep batting lineup, so you can still call for them. So yeah, जो गुजरात जायंट्स की, as we talked earlier, जो स्ट्रेंथ है वो ऑलराउंडर्स भी हैं इस टीम के। सो आई थिंक यस दिस वेरी गुड प्लेइंग 11 दैट इज प्रेडिक्टेड राइट नाउ, बिकॉज इट हैज अ गुड स्ट्रेंथ को काउंट कर रही है, ऑलराउंडर ऑप्शंस हैं, बैटिंग लाइनअप है, वी हैव बैटिंग या बॉलिंग में बैलेंस है आपके हिसाब से? बस इक्वल पेस अटैक है, इक्वल स्पिन अटैक है। सो आई थिंक या देयर इज अ बैलेंस बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग। Agree with this because it looks a young team, but it has a lot of skills and a lot of players have their own roles to be shown. So we will see in the field whether they perform well or not. But I'm pretty much happy with this, looking into this young Gujarat Giants team. Final slide, Rishika. That's a surprise question for you, and I need an answer for you for that. And going into the finals, here is the question for you. With Beth Mooney's return to the side this season for the Gujarat Giants, do you think they can make a better team progress this season into the WPL 2024? They're going to make a good result. There is going to be a best result for this team, I think, क्योंकि
मैं ये पूरे all over the video I have said that I am very confident with this team, with the options in this team, like all rounders, batting, bowling, everything, young talent and all. So I'm very confident about this team, and yes, they are going to lift the trophy according to me, because yes, I'm the Gujarat Giants supporter, man. ओके आपको थोड़ा ये जो कॉन्फिडेंस है ना वो गुजरात जायंट्स का वुमेन्स टीम को बहुत जरूरत है बिकॉज आई थिंक दे विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग दिस सीजन with the inclusion of Beth Mooney, as I said throughout the entire show. I am confident that this team will perform better than last season. What they can do on the field, we will witness in less than a week's time. Thank you for giving a very good description and a preview show of the Gujarat Giants. We wish them all the best. Thank you so much, Rishika, and thank you to all the viewers as well who are watching this show for the Gujarat Giants. That then concludes team number 2 of the WPL. And don't forget to subscribe to the channel of the Fifth Umpire as well. Till then, thank you so much and bye bye.